guys, right now if you have a question, then हमारे पास है 2-3 मिनट, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. Still, if you have a question, then you can ask here. जिसने भी मतलब ज्वाइन किया हुआ, आपको अप्रोक्स 50 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, 50 पार्टिसिपेंट्स ने. So right now, more candidates in a waiting session. So guys, what we completed up to this, the firstly we just print the function. We just familiar with the print. After that, the next one is how to get the data type of that particular variable, how to create a variable, how to set the data. After that, how to get the ID of that particular thing, and after that, how to get the value from the user. So for that, we have input function. But always the return type of that input is a string. And if you want to convert that one in a particular type, so you can use integer or str or float, you can use as per our requirement. So that's it for the input function and print function. Now guys, what is my next requirement? My next requirement is I want to just get two numbers from the user, and after that I want to just find the maximum from that. Okay, so I want to just use if and else actually. So for that, I want to get two numbers, but I need an integer data only. So what I will do, I will just use this integer function to typecast the return value of that input. Okay. So our program definition is, let me just use the comment session. So as is used to like make some comments. Okay. So write a program to find max from two numbers. So let me just write down, I want to get an integer number. So we have only one option, that is the input function, but return type of input is always integer. Sorry, return type of input is always string. So मुझे integer चाहिए था, तो मैंने उसको integer में typecast पहले से कर दिया. Let me just write down. Enter A. मुझे दो number चाहिए थे, and here let me just write down enter B. So now after this, my program definition is, my requirement is I want to just find the max from P. So generally हम लोग if conditions कैसे लिखते थे guys? If condition हम लोग generally कैसे लिखते थे? If A greater than B, then curly bracket and something like that. Else, then curly bracket and something like that. But in Python, curly brackets are not there, because why we use the curly bracket in C, C++, Java and other languages? Because the thing is, like मैं अगर C language की बात करूँ, so अगर मुझे यहाँ hello world लिखना ना, then we have to use actually a semicolon to terminate the statement. Okay, मुझे ये statement terminate करना, then I had to use the semicolon over there to inform the compiler that the statement is over. But in Python, whenever you will press the enter, जैसे आप enter press करोगे, what will happen? That is the indication that the printf statement or whatever the statement is over actually. अगर आप enter press करते हो, then that statement is over. But in C and C++, enter is not there. So Python में enter लगाने का मतलब that statement is over. So अगर मैं यहाँ से enter लगा के next line पे आ जाता हूँ, that means the effect of this if statement is over. Okay, इसका effect complete हो जाएगा. So if you want to continue a particular statement, actually you have to use a colon. Okay, आपको colon use करना है. Why we have to use a colon? To just inform the Python virtual machine, that's actually known as PVM. If you are familiar with Java, then JVM is there for Java virtual machine. So here we have Python virtual machine. So if you want to inform that PVM, I want to continue the effect of this if statement, then guys you have to do a simple thing, and that's you have to just use a colon after this if, or after a for loop, or after a function, or after a class definition, or whatever it is. Okay, so you have to just put the colon over here. And curly brackets are not used to represent a block of code. A block of code means if you want to add some codes, like I want to add 3 statements over here. मुझे if condition के अंदर 3 statements add करने हैं, like statement 1, statement 2, and statement 3. So this much of statements I want to add in this if condition. So that is actually known as block of code, a group of code you can say. तो अगर आप ये inform करना चाहते हो Python को कि sir this is inside the if, then you have to just use a space. हर एक के आगे एक स्पेस ऐड करिए या टेब ऐड करिए, that's up to you. कि अगर एक स्पेस भी ऐड कर सकते हो like that,
एक एक स्पेस भी आप ऐड कर सकते हो, and you can just add the tab also. So this is just like a way to inform the Python. This is a block of code. This much of codes I want to add inside this if condition. Okay, so my requirement is I want to just print a message that a is max or a is greater than b. Okay, just I want to print this. So मैंने colon add किया because I want to continue the if, and after that मैंने tab लगा के लिखा because मुझे ये if के अंदर रखना था. After the same thing we have to perform over here. else के बाद भी आपको same चीजें लिखनी है. मतलब same proper same like syntax you have to use to continue the else also. Let me just save this one by if1.py. So मैं दो नंबर यूजर से गेट कर रहा हूँ, सिंपल इफ कंडीशन है जस्ट. ओके, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में इसमें नहीं जाऊंगा बिकॉज आई थिंक that's not required for our session also, and बाकी सब familiar भी होंगे, इतना easy learn करने के लिए. Okay, so guys we have some problem and that is कहाँ पे problem है. So अच्छा है कि problem generate हुआ. So actually by mistake I pressed the enter over there. जैसे मुझे enter a का मैसेज आया, so that's not a syntax error actually, वो कोई syntax error नहीं था. मुझे enter a का मैसेज आया था, but after that expected input is integer. Why expected input is integer? Because I used the typecasting over there. मैंने यहाँ पे टाइपकास्टिंग यूज किया है. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी और इनपुट करूँ, जैसे मैं 10 इनपुट करूँ, 20 इनपुट करूँ, दैट वर्क्स. बट अगर मैंने यहाँ से हाई इनपुट कर दिया, देन इट्स नॉट वर्क बिकॉज यहाँ पे मैसेज था सर इंटीजर फंक्शन कैन नॉट कन्वर्ट हाई इनटू द न्यूमेरिकल वैल्यू. ठीक है, दैट्स अ प्रॉब्लम. सो अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, Python will inform you sir that is a problem. बट आपको अगर प्रॉपर वे में अपने डेवलपर को या अपने यूजर को इन्फॉर्म करना है, देन डू वन थिंग गाइस, just add the whole code in a try and except. That is actually known as exception handling. You can just write down as per the like your program code, you can just write a perfect message like enter an integer value. Okay, तो मैंने क्या किया, I just add one more block. So try, after that I want to continue, तो मैंने colon add किया and जितना भी कोड था उन सबको मैंने एक स्पेस दिया, एक टेब पास किया because मुझे ये पूरा का पूरा कोड, मुझे ये पूरा कोड किसके अंदर सेट करना था, ट्राई के अंदर. सो इट जस्ट इन्फॉर्म द पाइथन दिस इज इनसाइड द ब्लॉक एंड दिस इज द एक्सेप्ट. मैं इसको भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन दिस ट्राई देन कंट्रोल विल बी डायरेक्टली फॉरवर्ड टू दिस एक्सेप्ट. ओके, अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम है देन डायरेक्टली कंट्रोल विल बी फॉरवर्ड टू दिस एक्सेप्ट ब्लॉक. सो इस तरह का मैसेज नहीं आएगा एंड इफ नो प्रॉब्लम्स आर देयर देन योर प्रोग्राम विल मींस द ट्राई ब्लॉक विल नॉर्मली एक्सिक्यूट. जैसे अभी हमने 10 20 इनपुट किया और आई कैन जस्ट एंटर 11 and 2, दैट्स वर्क फाइन. बट अगर मैंने यहाँ से हाई इनपुट कर दिया था, एंटर एन इंटीजर वैल्यू, सो पाइथन का मैसेज मुझे नहीं चाहिए था. दैट वाज नॉट गुड फॉर मी बिकॉज यूजर को इतने मैसेज दे तो वो समझ नहीं पाएगा. बट अगर इस तरीके से कुछ मैसेज दिया हुआ है देन यू कैन अंडरस्टैंड, ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि उनकी मिस्टेक क्या थी. सो दैट्स दैट, हाउ टू गेट द like how to get the value from the user, how to use the typecasting, or how to convert your data from a single data type to other data types, how to use the if condition in if and else actually. So that's that. अगर इस किसी को यहाँ if condition या input या integer में problem है, then they can ask the question. Not about the try and except. Try and except is other thing. उसके लिए मैं क्वेश्चंस पूछने के लिए मतलब अभी वो डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे इस कोड में कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं. Yes, guys. If any question, then you can ask how to print the value, how to get the value, how to typecast that, means convert the data type, and how to use if and else. Okay. So मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई problem नहीं है. You can just write in a chat box also. So guys, the next thing is a for loop because as per the slide हम लोगों ने ऐसा कुछ discuss किया कि we will learn these things. So right now we are familiar with if condition. So right now we are familiar with the print function, input function, and if condition. So now let me start looping. So I will not cover all the loops here, and सबके सब उसके details भी cover up नहीं कर पाएंगे. But let me just be familiar with this for, क्योंकि मुझे SQL के साथ उसका use करना है. So guys, if you have a group of data, मैं पूरा for loop भी cover up नहीं कर रहा हूँ, but if you have a group of data like in Python, you can create an array. So for that we have an array function as well as we have a list, tuple, we have a like set, lots of other data structures are also there, but I am just using a list. So अगर मैं यहाँ पे कोई एक array create कर रहा हूँ, so consider simple, please accept this कि in this way we can create the array. So मैंने एक simple variable का नाम लिखा, that's a or something like that. So a equals to some data is there. So if you are from C, C++ or Java background or whatever the language, generally square brackets are used to represent an array. Okay, so मैंने यहाँ पे square bracket use किया.
So now my requirement is I want to get the value from this A and want to print all of this in a individual line. So for that, I just use for I in A. So what is that A? It's my data structure, or I can say that it's an array. Okay, right now it is list actually. And if you want to know the data type, you can just print this thing. अगर आप data type आपको जानना है, then you can just do this type of A. Okay, we are familiar with this. कि आप इस तरीके से उसका type निकाल सकते हो. You can just find the data type. तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? For I in A. So what is actually the working of this for? वो एक एलिमेंट A में से fetch करेगा and will store that in a sorry in a I. एक एलिमेंट A के अंदर से fetch करेगा, I के अंदर store करेगा. Now we have to just as per my program's requirement, I want to just print that. So मैंने simple लिख दिया print type. That's that. And यहाँ पे colon क्यों लिखा? Because I want to continue that step. So let me just save this. So that's o1.py. Okay, and now let me run this. Okay. o1.py. So here we have 1 2 3 4 5. And why this class list is there? Because हमने उसका type print किया था. That's that guys. That's a simple thing. Okay. So अगर आपके पास कोई data है, and if you have a group of data, and if you want to visit all this data, then simple. If you want to use a for loop, then this is the syntax. A dummy variable name. Sorry. After a for keyword, you have to just use a dummy variable name. After that, in keyword is there, and after that, you have to use that. Sequential data structure name. Okay, whatever the group name is there. Okay, and after that, आपको जो भी अंदर task perform करना, you can do this. So that's something about the for loop. मुझे सिर्फ syntax से familiar कराना था. So that's something about the for loop. Okay, so up to this, what we completed right now. Up to this, we are familiar with this print function, input function, if condition, and looping. So that's that. Now, guys, the next thing is मुझे Python को like right now we are able to work with the database actually. So मुझे Python को database के साथ connect करना है. So for that, we have a Python on a side. On one side we have a Python, on another side we have a database. And now if you want to connect, if you want to make a connection in between Python and database, then guys, you must be familiar with some credentials on some basic information about the database, and that is आपका database software कौन से machine पे loaded है, like that's a IP address, or you can say that that's the host name कि जहाँ पे आपका database का software working mode है. Right now in my system जहाँ पे मैं program अभी perform कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम के ऊपर ही मेरे पास डेटाबेस भी मैं यहीं पे सेम सिस्टम पे यूज करूंगा ना. आई विल यूज अ पाइथन प्रोग्राम आल्सो. सो मैं लोकल डेटाबेस यूज करने वाला हूँ. मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर एंड पाइथन दोनों मेरे पास सेम सिस्टम पे होगा. सो फॉर दैट आईपी एड्रेस और होस्ट नेम आई विल यूज अ लोकल होस्ट ओवर हियर. ओके, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पाइथन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि भाई ये सिस्टम पे डेटाबेस है. Another thing is some credentials I have to provide, that is username and password. If you want to work with this database, then you have to just use this username and password to work with this database. So मुझे ये Python को provide करना है. And one more thing I have to provide, that is a database name. ये जो ऊपर मैंने तीन चीजें provide की, that is IP address, username and password, ये database software के हिसाब से था. Okay, like MySQL or Oracle or MongoDB, something like that. And after that जो मैं database का नाम provide करूँगा, that's something like ये सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डेटाबेस कौन सा है, सॉफ्टवेयर के अंदर डेटाबेस कौन सा है. सो गाइज ये जो भी कर रहा है वो प्लीज डिस्टर्ब ना करिए. थैंक यू. बिकॉज वो सब लोग डिस्टर्ब होंगे, आपके एक के सिस्टम पे नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस थिंग आई हैव टू प्रोवाइड टू पाइथन. एंड गाइज पाइथन के अंदर इन पाइथन वी हैव अ मॉड्यूल. एक्चुअली मॉड्यूल मींस लाइब्रेरी. सो वी हैव अ लाइब्रेरी जिसको ये चीज की जरूरत पड़ेगी, एंड ये लाइब्रेरी पाइथन प्रोग्राम का डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेगा. एंड दैट्स नथिंग बट अ MySQL कनेक्टर. दैट लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ MySQL कनेक्टर. सो आई विल प्रोवाइड जो रेक्टेंगल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आई विल प्रोवाइड ऑल दिस थिंग थ्रू MySQL कनेक्टर. And what is the task of that MySQL connector? MySQL connector will connect your Python program with the particular database software. Okay, so guys, if you use the MySQL connector library, then it will connect your Python program with the MySQL only. Okay, now if you want to connect your Python program with the SQLite, then the library name is SQLite 3. Then आपको library, that library actually known as module in Python, then आपको SQLite 3 नाम का module use करना है. If you want to work with the Oracle, then some another libraries or some another modules you have to use. So especially this MySQL connector is used to connect your Python with the MySQL database. Okay. So now guys, what is MySQL connector? It's a predefined library or just a module. You can say that module in the Python
terminology. So what it does and how to install that. So guys, it is not available with the Python. वो by default Python के साथ available नहीं है. You have to just use this command. That's nothing but a Python. Sorry, that's a pip3. That's a pip3 install MySQL hyphen connector. And यहाँ पे एक चीज लिखी है, that is with admin permission. That means you have to just press the start button, write down CMD. 1 minute. So just open the start menu, just write down CMD. So you will get a drop down with the command prompt over there. Just right click on that. इसके ऊपर right click कर दीजिए, and after that you will get the option that is run as administrator. Okay, what I did, मैं एक बार repeat कर देता हूँ. I want to just open the command prompt, but with the admin permission. So what I did, I just typed the CMD in start, and after that just right click on this. इसके ऊपर right click करना and just select the option that is run as administrator. Okay, and here you have to just pass the command, and that command is, I already mentioned it. So that command is pip3 install, and just write on MySQL hyphen connector. Okay, this is already installed in my system. Just press the enter. मैंने already install कर रखा है. It takes some time. Depends on the configuration and bandwidth of internet. So it takes some time. Actually मेरे system में already installed है. So I will just cancel this process. मैं load नहीं बढ़ा रहा system पे. Okay, that is already installed in my system. So that's the first thing. That is not available with the Python. So आपको पहले इसको install करना है. After that, what is the task of this MySQL connector? Actually, it is responsible to connect your Python with the MySQL database. Now after that, the next thing is it has some function to run the SQL query, and also having some functions. Lots of things are there, but in this session we require this, and some more functions are there to get the result of that SQL query. Okay, so let me just go through this. मैं इसको एक बार check करते हैं हम लोग कि how to work with this one. So guys, the first thing is before installing this, अगर आप ऐसा कुछ command pass कर रहे हो to install the MySQL connector, जैसे हमने अभी देखा, that's a command. आपको ये command pass करना है MySQL connector नाम का in a command prompt. But before that, be careful. MySQL must be installed. That is a prerequisite. MySQL installed होना चाहिए. Okay. So now what is my requirement? मुझे check करना है that library is connected or not. So we have to just write down that library is installed or not. I want to just check. So write down import and MySQL dot connector. You have not to use hyphen over there. आपको यहाँ पे dot लिखना है. Now let me save this. So मैं इसको db1.py से save करता हूँ. Okay. Now if that library is not installed, then this program will generate a bug. And if it is installed and directly Python के साथ connect हो गया, then no problems are. Okay. So that's that. So up to this हम लोगों ने सिर्फ library को Python में कैसे use करना है वो सीखा. Now guys, I just start the MySQL. मैं MySQL start कर देता हूँ. That's an older version, but it's okay. So now guys, I want to create a database. So मुझे एक अलग सा database create करना है. So for that we have to just write down create database, and मैं लिखना चाहता हूँ tempdb. Okay, and we have to just press the enter. But guys, I do not want to perform any operation in this SQL. मुझे ये सब के सब operation Python के through करना है. So that's the first thing. ये हमने पहला क्या किया? Check libraries installed or not. Now next, copy this. Now in the next program, I need the library, and my requirement is I want to connect my Python program with the database. So I have to provide some credentials. जैसे हमने ये slides के अंदर देखा था, we have to provide something, and that something is an IP address, username, password, and database. This much of things we have to provide to this MySQL connector. But as you know, I have no database. I want to create a fresh database. I want to create right now. Okay, so database मेरे पास नहीं है. So guys, just provide these three things. That is IP address, on which like IP address means कौन से system पे आपका database है. Another thing is just provide the username and the password. These three things I want to provide. अब ये तीनों चीजें मुझे किसको provide करनी है? I want to provide all these three things to this MySQL connector. So for that we have a function that is MySQL.connector.connect, and you have to provide all these three things in this function. But now that's a typical thing. मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ेगा. So let me create an shortcut of that. That is known as alias. So मैं इसका एक alias create कर रहा हूँ, like MySQL.connector as a DB. कुछ भी लिख सकते हो. That's your choice. So now let me just write down db.connect, and I want to provide three different things. The first thing is an IP address. For that I will just use host over here. Okay, and मैं same system पे काम कर रहा हूँ, मतलब database.
डेटाबेस और पाइथन दोनों मेरे सेम सिस्टम पे अवेलेबल है, सो मैं यहाँ लोकल होस्ट लिखूंगा। अगर आपके पास सेकंड different system पे अगर आपके पास database है, then just write the IP address over there. And after that, I have to provide the username, so that's the root for my system, and the password, so that's blank. Okay, so ये username and password मैं SQL MySQL software पे provide करूँगा, and ये जो answer आया उसको मैं connection के अंदर store कर रहा हूँ. Now मैंने database provide नहीं किया. Okay, so now that's db2.py. Now I want to create a fresh database. So for that, my query is create database, and that's like online db1. That's my database. मुझे ऐसा कोई database create करना है. So if you want to execute this query, then we have a function, and that function is execute. So just pass q in this execute function. तो हम लोग को ये function run करना है, but guys, this execute function is from cursor class. So you have to create an object of that cursor. So for that, I will just write down cur, that's an object name, like a variable name. जैसे हम लिखते थे a equal to 10. So something like cur equals to db dot, sorry, not the db, con dot cursor. Okay, so what is that con? It's an return value of this connection. So actually that's an object of this connection type जिसके पास total information है. Okay, तो इस information मतलब ये particular software के ऊपर मुझे queries fire करनी थी, तो उसके लिए मैंने cursor का object create किया, and using that cursor I want to just fire the query. That's that cursor dot execute in the basic queue. That's that. ये simple सा code है. So सबसे पहली चीज हम लोगों ने library add की, is MySQL connector. So it is responsible to connect the Python with the database, especially MySQL database. तो उसका मैंने एक alias create किया, and after that I just provide some credentials. That first thing is मैंने localhost provide किया, मतलब database कहाँ पे है. After that I provide the username and password, and it returns an variable. तो मैंने उस variable मतलब it returns some data. उसका एक live string उसने मुझे provide किया, उसको मैंने एक variable के अंदर store किया. This is my query to create a database. After that मैंने cursor का object create किया, and मैंने वो database का वो query को मैंने execute करना. ठीक है, so I used the execute function. So now let me run this. So db2.py. So no errors at all. तो मुझे चेक करना है that query is successfully run or not. तो अगर वो successfully execute हुआ तो ये database मुझे मिलना चाहिए. Okay, so for that I have a command that is show databases. So lots of databases I have actually in this system. So let me just scroll up. So हमारा नाम था online db1. Here it is. Sorry. One minute. So that's it, online db1. Here we have. Okay, that is online db1. Is it okay? So database is successfully created. But as I told, मुझे MySQL पे कोई भी operations perform नहीं करने. So guys, which command we passed? हमने कौन सा command pass किया था? So here we passed a show databases. मैंने ऐसा कुछ command pass किया था. So ये same command मुझे Python से pass होता है. So let me just copy something for this. तो ये दो line में copy paste कर रहा हूँ. Import the library and connect with the database. And now my query is show databases. Just query change किया. Now this thing was also same. ये दो statements भी मैं copy paste कर रहा हूँ. How to create the cursor and how to execute the query. Now let me save this. And मैं comment भी इसके ऊपर set कर देता हूँ. Display all databases. Okay. Now let me run. देखते हैं किससे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा. And अगर नहीं हुआ तो कुछ और option ढूंढते. So db3.py. Oh, query successfully executed, but output नहीं आया. So guys, I told you कि ये भाई साहब responsible है. इसके पास सब कुछ है. Result वापस लाने के लिए भी उसके पास functionalities है. So अभी हमने execute किया query को, but it will not return the result. So अगर आपको result चाहिए, then you can simply write down res मतलब that's a variable is equals to cur dot fetch call. So we have a function. अगर आपको result चाहिए, then you have a function that is fetch. Okay, that's cur having some data. And guys, ये अपने को array return करेगा. Array means what? Lots of databases are there. तो पूरा database return करेगा. So अगर आपको array के साथ work करना है, then you can simply write down for loop. ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने समझा था. So that's that. ठीक है कि how to work with the group of the data. So मुझे सिर्फ result चाहिए था. जैसे show databases करने पे SQL पे सब data display हुआ था. I want to display. Oh, lots of things are there. So yeah, all the data are displayed. So let me just check. Yeah, here it is. Online db1 is there or not? So here we have. So मैंने सिर्फ data display किया हुआ. Okay.
सर डेटाबेस का इंफॉर्मेशन दैट्स टिपिकल. मेरे पास एक मैसेज है, गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस. सो गाइस इट्स टिपिकल वन राइट नाउ फॉर दिस सेशन, क्योंकि मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन दैट इज आवर मेन टॉपिक. So you can like search on Google also for some queries like show databases and create databases and etc. Okay, simple. If you want to create something, then you have a create keyword, or you can say the create function in a MySQL to create the database, and so is just used to list out all the things. So I hope अगर MySQL के related अगर आपको query नहीं है, the session is for specially Python. So अगर आपको यहाँ पे कुछ problem है, then you can ask. Okay, so हम लोगों ने यहाँ पे पहले database के साथ connectivity की, just write the query. कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एग्जीक्यूट किया क्वेरी को, देन जस्ट फेच द रिजल्ट एंड प्रिंट ऑल दिस. So guys, if you have a question in this, then you can, if you have some problems in this, then you can ask. ये प्रोग्राम में या इसके पहले वाले प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो. यहाँ पे हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, एंड दिस जस्ट लिस्ट आउट ऑल दिस डेटाबेस. जितने भी डेटाबेसेस अलाउड अवेलेबल थे मैंने सबको डिस्प्ले किया. बट नाउ if I will, okay, just ignore that. Okay, so that's how to display the database. So now guys, the next thing is, मुझे अब next ऐसा करना था कि I want to create a table. Actually मुझे एक table create करना है, and I want to perform the insert operation, and after that I want to perform the select operation. Means I want to fetch some data from the table. So now I want to create a table with 3 different columns, that is ID, name and password. मुझे सिर्फ 3 columns चाहिए. So ID के अंदर मैं numerical value store करूँगा. For that I will just use an integer data type. So ID integer. For name I will use a string type of data. For that I will just write down varchar. Varchar is just a string. And for the password also, मुझे string type of data store करना है. So that's a schema. That's a required schema of my table. So for that I will just use a query that is create table and then table name, that is a test. Actually मैं कुछ भी रख सकता हूँ, like I want to just use a test over there. Now just use the round bracket over there and comma separation, just pass the column name with the data. So that's that. So ये मेरा query होगा table create करने के लिए, create table test, and I need 3 columns with the ID, name and password. So that will be the query. ये मेरा required query है जिसको मैं execute करना चाहता हूँ. So for that we require first we have to import the module. So let me just copy that and then just connect it with the database. Python को database के साथ connect करने के लिए कुछ credentials pass कर दीजिए. And guys, one more thing, you have to just select the database. So right now I have a database, so मैं यहाँ पे एक और argument pass कर रहा हूँ, that's nothing but a database. Okay, and my database name is actually OnlineDB1. Okay, so I am using one more argument because right now I have a database. And after that I want to fire the query. So this is the query. And if you want to execute this, firstly we have to create a cursor object, and a simple thing is you have to just execute by using this execute function. db4.py. It's quite easy. Execute करने के लिए Python में बहुत simple सा option दिया हुआ है. So let me comment create a table. Okay, just create a table. So that's it. So मैंने एक table create, मतलब एक query लिखा हम लोगों ने with table name and 3 columns, and after that just use the cursor object to run the query. Okay, let me run this. So db4, okay, let me just clear this screen. db4.py, that's it. So no errors at all, that means table is created. So now I want to just list out all the tables कि कितने tables है इस database के अंदर, कितने tables है. So मैं इस program को save कर लेता हूँ because right now we are familiar with almost the things. Now query must be, अगर आप tables का list चाहिए अगर आपको, then query must be show tables. जैसे so databases था, in the same way show tables will be there. Okay, and let's just comment list all the tables. Okay, so guys, query execute करने के बाद अगर आपको ये show tables का result चाहिए, then we have to do one thing, that is result is equals to means variable is equals to cursor dot fetch all. And if you want to work with this RST, अगर इस RST के साथ आप work करना चाहते हो, then just use the for loop. So that's it, and print the R. So let me run this db5. So if the table is created, you will get a name of that table. One more question I have, that is how that connection object work in the background. That's also not the topic right now. मैं उसका theory ऐसा हो तो आपको WhatsApp कर दूंगा, आप मुझे WhatsApp पे hi कर दीजिएगा. Guys, my WhatsApp number is 7777 956877. This is my WhatsApp number.
सो प्लीज नोट इट डाउन, अगर आपको कुछ क्वेरीज है मैं लास्ट सेशन के बाद भी ये डिक्लेयर कर दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो जो भी आपका क्वेरी है, बिकॉज एक क्वेश्चन था कि हाउ दिस हाउ दिस कनेक्ट फंक्शन वर्क्स इन ए बैकग्राउंड। सो इफ यू वांट द डिटेल्स देन आप ऐसा भी कर सकते हो, पाइथन को भी पूछ सकते हो बाय यूज दिस हेल्प इन द ब्रैकेट db.connect। आप ये भी लिख सकते हो, सो यू विल गेट एन लाइक डॉक्यूमेंटेशन फॉर दैट कनेक्ट फंक्शन। ठीक है, सो आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं, बिकॉज पाइथन ने सबको इंडिपेंडेंट बना दिया। ठीक है, और प्रॉपर वर्ड यूज करें तो आत्मनिर्भर, सो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो गाइस दैट्स इट। तो जितने भी टेबल्स मेरे पास थे, राइट नाउ वी हैव ओनली वन टेबल दैट इज टेस्ट, सो मैंने वो टेबल के नाम लिस्ट आउट किए, दैट्स इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, फॉर दैट मॉड्यूल इज देयर। डीबी के साथ कनेक्टिविटी की, वी जस्ट राइट द क्वेरी, कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको एग्जीक्यूट किया, रिजल्ट को फेच किया, एंड वी जस्ट डिस्प्ले ऑल दिस डेटा। So that's that guys, and after that now I want to insert some data in this table। मेरे पास एक टेबल था, मुझे उसके अंदर कुछ डेटा इंसर्ट करना था। So that's dbins1.py। okay, मैं इस प्रोग्राम को सेव कर रहा हूँ like dbins1.py as, and okay, now I want to insert something। for that I have a query that is insert into, and my table name is test, and I have 3 columns guys, id, name, and sorry, that's what was the column name? That was actually id. One minute. So id, the second column name is name, and the last column name is password। तो मेरे पास 3 column है। So let me just write down here id, name, and password। तो मुझे dummy data insert करना है, then this is the syntax of this query: insert into then your table name, insert into then table name, and these are the column names। Okay, now I want to insert some dummy data, so I want to just insert 1, and after that let me just write down AAA, and okay, now I will use a single quotation, and 5 times or 6 times A I want to use. Okay, that's a dummy data, do not worry about that। So normally dummy data I want to insert in the table, so these are the column names, and I want to insert this one। Same thing is there guys, right now I do not want to work with the result type, मुझे उसका return नहीं चाहिए। So that's the query। This is the query and how to execute test। This is the function to run this query। So first of all module import किया, database के साथ connectivity, and one more thing we have to provide over here, that is database, that is online_db। आपको एक और चीज प्रोवाइड करनी है, that is a database name। Okay, so this is the query। So let me create the cursor object and run that। So that is db_insert1.py। so that's successfully inserted। okay, that is successfully inserted, वो insert हो चुका है। Now let me insert one more dummy data। so let me just write down 2 BBB and 6 times B's। If we run that, that is also successfully inserted। मैं कुछ dummy data insert कर देता हूँ, and after that we will get the data from user and we'll try to insert that also। okay, so 3 BBC and 6 times C। so that's working actually। so मैं यूजर से डेटा लेके इंसर्ट करने की ट्राई करते हैं हम लोग 2 मिनट के बाद, बट वन मोर थिंग इज दैट मुझे ये डेटा को डिस्प्ले करना है। सो ओके, insert data in table। now guys I want to like display data of table। I want to do one more thing। so as per the routine task, ये कुछ typical जो भी statements हमको चाहिए थे, let me copy paste that thing। so ये statements को मैं copy paste कर देता हूँ। now query will be like I want to display all these things, so select star from your table। so select star from test, and if you want to that it returns the whole table, पूरे data मुझे return करेगा। so if you want to display all this, you have to simply write down rst is equals to cur dot fetch all। and अब cur के sorry result के साथ कैसे work करना है, all having an idea for I in rst, and just print the I। so that is db_select 1.0। मुझे सिर्फ चेक करना था कि ये जो क्वेरीज, ये जो डेटा हमने इंसर्ट किया वो सक्सेसफुली वर्क किया है कि नहीं। ओके, सो लेट मी रन दिस। सो db_select1.py। व्हाट इज द प्रॉब्लम? गाइस हियर वी हैव नो डेटा एक्चुअली, यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो लेट मी चेक कहाँ पे प्रॉब्लम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट। सो गाइस द प्रॉब्लम इज यहाँ पे मुझे एम्प्टी टेबल मिला है, यहाँ पे कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं हुआ। हमने 3 बार डेटा इंसर्ट करने की ट्राई की थी, बट वी गॉट नथिंग। So actually after this execute we have to use one thing that was I forgot that we have to use one command that is cur.commit। okay, without commit the data will not be stored।
ठीक है, अगर आप कमिट फंक्शन यूज नहीं करते हो तो आपने इंसर्ट किया था बट डेटा इज नॉट इंसर्टेड एक्चुअली। सो व्हाट आई विल डू, मैं एक बार वापस ये पूरा लिख देता हूँ। ये 3 रिकॉर्ड इंसर्ट करने थे, तो मैंने अभी बाकी के दोनों स्टेटमेंट्स को कमेंट किया हुआ है, सेकंड एंड थर्ड क्वेरी। So now let me insert that. So first data, and now let me just check this select. So right now we have a data inserted. Okay. Now मैं first statement को comment करके second का comment remove कर रहा हूँ. In short, I want to insert this 2 triple B and 5 times. Okay. Let me insert that. And मैं select वाला query, select वाले function में मैंने कुछ भी, select वाले program में मैंने कुछ भी changes नहीं किए. So I have 2 different elements over there. Now let me remove the comment from this third queue. ओके, तीसरी क्वेरी के बाद से हम लोग क्वेरी रिमूव, सॉरी कमेंट रिमूव कर रहे हैं, उसको रन करने के बाद सिलेक्ट चेक। सो वी हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। ओके, सो राइट नाउ वी हैव 3 डिफरेंट एलिमेंट्स। सो गाइस, वी हैव टू यूज दिस कमिट बिकॉज़ बाय डिफॉल्ट ऑटो कमिट ऑपरेशन इज false, by default auto commit operation is not there in a python. So आपको इंसर्शन के बाद, इन शॉर्ट एनी डीएमएल, कोई भी डीएमएल के बाद आपको ऑटो कमिट लिखना कंपलसरी है। ओके, सो तो गाइस दैट्स दैट। अभी हम लोग सेशन एक बार 1 सेकंड स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज वी हैव ओनली 3 मिनट्स। सो एक बार और आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो प्लीज ज्वाइन इन द न्यू सेशन। मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन दैट। तो अभी हम लोगों ने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, इंसर्ट एंड सिलेक्ट, ये चीज कंप्लीट की। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल हैक आवर डेटाबेस एंड आफ्टर दैट वी विल स्टॉप द हैकिंग। ओके, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न एसक्यूएल इंजेक्शन। प्लीज रीजॉइन गाइस।